students, let us continue with the topic of improvement in food resources. So in our previous class, we studied about the crop production management. Crop production management, we studied about nutrient management. In nutrient management, we have seen that what are macronutrients, what are micronutrients, what are fertilizers, what are manures, and how the use of fertilizers and manure affect the agriculture, and also how the long-term use of fertilizers affect the agriculture. So now in today's class, the topic will be irrigation. When we talk about irrigation, we talk about water. Now the question is, what are the sources of water which is used for irrigation purposes? So most of the agricultural practices in India is rain-fed. Rain-fed का मतलब क्या होता है? That is totally dependent upon the monsoon. अगर monsoon अच्छे से आया, monsoon is sufficient, so the irrigation, the water available for the agricultural land will be sufficient. And if the monsoon, if there is poor monsoon, this causes the crop season to fail. Ensuring that the crop gets water at right stages during the growing season can increase the expected yield of any crop. Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under the irrigation. India has a wide variety of water resources and a highly varied climate. Under such conditions, several different kinds of irrigation systems are adopted to supply water to agricultural lands. Depending upon the type of water resources available, these can include many things like wells, canals. We'll see one by one. Okay, so let us see what are the sources of water. First, as I have discussed, first is the rainwater. Rainwater, which is the naturally अगर मानसून अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर को इरिगेशन अच्छी मिलेगी, और मानसून अगर पुअर होता है तो वो क्रॉप की यील्ड को कम कर देता है. द सेकंड इज वेल. वेल यानी कि कुआं. देयर आर टू टाइप ऑफ वेल. वन इज द डग वेल एंड अनदर इज द ट्यूब वेल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डग वेल एंड ट्यूब वेल. Dug well and tube well. In dug well, water is collected from water bearing strata, whereas in tube well, water can be tapped water from deeper strata. From these wells, water is lifted by pump and used for irrigation. So you can write a difference between dug well and tube well. You can expect a question which will ask about the difference between dug well and tube well, and also most commonly, you can expect one MCQ multiple choice question about the dug well and tube well. The next in the line is canals. Now what are canals? Canals are usually an elaborate and extensive irrigation system. In this system, canals receive water from one or more reservoirs or from rivers. The main canal is divided into branched canals having further distributaries to irrigate the fields. होता क्या है, एक रिजर्वायर होता है, जिस फॉर एग्जांपल रिवर. ठीक है, तो रिवर से जो है वो डिफरेंट चैनल्स निकलती हैं और ये चैनल्स हमारे फील्ड्स तक पहुंचती हैं, और इन चैनल्स को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज या कैनाल्स. तो कैनाल्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इरिगेशनल प्रैक्टिसेस. द नेक्स्ट इज रिवर लिफ्ट सिस्टम. इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट, जहाँ पे कैनाल फ्लो इनसफिशिएंट होता है वहाँ पे हम लोग रिवर लिफ्ट सिस्टम का यूज करते हैं. In river lift system, what happens? Water is directly drawn from the river for supplementing the irrigation in areas close to the river. रिवर से वाटर को डायरेक्टली लेते हैं और एग्रीकल्चरल लैंड में इरिगेशन के लिए यूज करते हैं. तो जैसा कि नाम में ही देख सकते हो, रिवर लिफ्ट सिस्टम. ओके, द नेक्स्ट इज टैंक. वाटर टैंक. दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर्स. इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना इंडिविजुअली मैनुअली जो है वो पानी को स्टोर करके रखते हैं टैंक में और उसको फर्दर यूज करते हैं इरिगेशनल प्रैक्टिसेस के लिए. ओके, सो यू कैन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस इरिगेशनल प्रैक्टिसेस फॉलोड इन इंडिया, दैट इज ऑन रेन वाटर, ऑन द मॉनसून, ऑन वेल्स, कैनाल्स एंड रिवर लिफ्ट सिस्टम. नेक्स्ट यू कैन सी what we have to study in irrigation is rainwater harvesting and watershed management. These are the fresh initiatives. These are the new initiatives which is used in order to increase the water available for agriculture, including the rainwater harvesting and watershed management. So what is rainwater harvesting and what is watershed management? This involves building of small check dam which lead to increase in groundwater levels. These check dam stop the rainwater from flowing away and also reduce the soil erosion. होता क्या है, बारिश का पानी, रेन वाटर, उसको हम लोग स्टोर करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसको हम लोग चेक डैम बोलते हैं. वो स्टोर वाटर जो है वो धीरे धीरे जमीन में परकोलेट करता है, लीचिंग प्रोसेस से वो नीचे जाता है
और वाटर का जो टेबल है ग्राउंड के अंदर उसको वो बढ़ा देता है। ग्राउंड वाटर का टेबल बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा तो मोर वाटर जो है वो अवेलेबल हो पाएगा वाटर इरिगेशन के लिए। So you can write a short note on rainwater harvesting and watershed management. So I have given two questions. Write a short note on rainwater harvesting and watershed management, and also write a short note on various irrigational practices followed in India. Okay, this is for this class. Next we will cover in the next class. Thank you.